So hello everyone and welcome back to the new video of this channel. So today we'll be solving a problem which is minimum bit flips to convert number lead code triple to zero problem. So let's see the problem statement. So problem is basically saying that we have given two integer. First is start and the second is goal. We have to convert start to goal and we have to find out how many minimum number of operations we can use to convert start to goal. So basically, if start equals to 10, so firstly we have to convert it to in binary form, which will be 1010. If you know the binary form, firstly you see the how to convert the decimal to binary form, then you can solve this problem easily. So we have given a start which is 10. The binary form of 10 is 1010, and the goal which is 7. The binary form of 7 is triple one, and now we have to convert this start to goal and find out the minimum number of operations. So you can see in this example the binary representation of 10 and 7 is 1010 and 0 triple one respectively. So we can convert 10 to 7 in three steps. Like first is we can flip this bit 1010 is the 10, and we can convert the initial bit to 1, so it will be something like 1011. Then again we can convert this bit, so it will be something like 1111, and again then we can convert this bit, it will be something like 0 triple one. Now 0 triple one is our 7, because we know the binary representation of 7 is 0 triple one. So that's why the goal, we achieved the goal. So the minimum number of operation that we used here is 3. So in this case we have to return 3. Let's see this example also. Start is 3 and the binary form of 3 is 1 1, and the goal is 1, goal is 4, which is 100 in binary form. So we have to convert this again in like start to goal. So the minimum number of operation that we will use is 3 also here. So you can see the steps 0 1 1, then we are converting this bit to 0, then again we are converting this bit to 0, and now we are converting this third bit to 1, so that we can finally achieve the goal which is 4. So here basically what we are doing is we are firstly finding out we are firstly converting the integer forms to binary representation. So that is why first observation that we will convert the integer to binary representation. So this is the first observation. Now second is like मेरे पास binary representation दोनों की आ चुकी है, ठीक है. Now what I will do, I'll convert these two in string form. I am telling you the basic approach, okay. स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम एक बार रिवर्स कर लेंगे इसको कि यार दोनों को स्ट्रिंग को कौन सी मैक्सिमम है, ठीक है. उतने टाइम से उसको ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि यार ये वाली बिट के इक्वल है या नहीं. अगर इक्वल नहीं है तो उसको इंक्रीज कर देंगे ऑपरेशन. दैट दिस इज द कोड दैट आई यूज्ड इनिशियली. like here what we are doing is I'm firstly creating a function which is int create with, ठीक है. You can see this function here. So yes, what we are doing here is basically we are creating a function which will convert integer to binary form. So integer create with, and in this function I am passing a number. So firstly what we are doing is basically we are creating a vector so that we can store the bits. Now this is a simple function to create a this is a simple code to create to convert decimal to binary form. While number is greater than 0, we are finding out the remainder, and we are dividing the number divided by 2, and we are pushing that remainder in my answer. Now after this we are reversing the answer, because we know the if we want to find out, we want to convert decimal to integer. Firstly we are doing this is now we have to reverse the order of the remainders. So that's why I have stored the remainders in the answer, and now we are reversing this form, and like we are creating a binary number, and we are just doing the like this is the number 10, and we are converting this 10 to binary form which is 1010. Now this will give me the binary number which is 1010. Now after this
We are converting these two like start and goal. Okay, and we are converting these two in string form also. Now we want to find out the maximum number of size, because we know here the size is 4 1 0 1 0, and here the size is 3 1 1 1. So whichever size is maximum, like here the 4 is maximum, so we are finding out the maximum size. And like if a का size छोटा है 4 से, like you can see here a का size यहाँ पे कितना था, स्टार्ट का साइज 4 था, तो 4 इज लेस देन 4 नहीं है। यहाँ पे गोल का साइज कितना था, 3 था, बिकॉज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 इज 1 1 1, जो कि साइज 3 है, तो 3 लेस देन 4 है। तो इन दैट केस मैं 3 के जो 1 1 1 है उसके पहले एक जीरो लगा दूंगा, ठीक है। सो जीरो प्लस बी, सो दैट कि मेरे को है ना बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। बिकॉज अगर मैं 7 का डायरेक्ट बाइनरी फॉर्म लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 1 1 मिलेगा। बट हमें जीरो भी चाहिए आगे, क्योंकि मेरे को कंपेयर करना है बेसिकली। सो फॉर कंपेयरिंग पर्पस आई विल ऐड जीरो हियर, ठीक है। नाउ आई एम initializing a variable which is operations, and I am just checking like and traversing the number, and आई एम जस्ट चेकिंग कि यार अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ आई, element of a string is not equal to element of b string, so in that case I can increase my point operation. But it is passing 78 cases, but it is not passing all the cases, so that's why I use a optimized approach. So optimized approach is basically XOR operation. We know the property of XOR is if we find the same numbers like 1 1 and 0 0, that will convert it to 0. And if we find different bits like 0 and 1 and 1 XOR 0, so in that case my XOR result will be 1. So different number को 0 बना, सॉरी different number को 1 बना देगा और same number को 0 बना देगा, ठीक है। So start is 1010 and goal is 0111, ठीक है। So after the XORing operation, 01 will give me 1, same number 11 will give me 0, different number 01 will give me 1, and 10 will give me 1. So this is a XOR result that I am getting. Now the trick is very simple कि यार ये देखो इसमें कितने 1 है, ठीक है, 3 है, तो 3 is my answer. So you can see this whole steps like how we are getting 3 steps here. But I told you the trick for this problem. So now let's do the code for this problem. So code is very simple. I am initializing a XOR result, int XOR result equals to start XOR goal, ठीक है। Now I have the XOR result. Now what we will do, I am creating a count, int count equals to 0, and sorry, I will apply a loop while my XOR result is greater than 0। जब तक मेरा XOR result greater than 0 होता है तब तक के लिए मैं ये steps यूज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, count plus equals to, अब देख रहे हैं XOR result and 1। ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया कि जो मेरे पास मिनिमम या वी कैन से कि जो भी ये वाली बिट होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, इस वाली बिट को नाम भूल गया मैं, ठीक है, जो एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट बिट बोल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम सिग्निफिकेंट बिट है ना, उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि यार वो 1 से एंड करा रहा हूँ। अगर मेरे पास वो 1 होता है तो ठीक है, अगर 0 होता है तो फिर हटाओ, ठीक है। 1 होता है तो इंक्रीज कर दूंगा काउंटर, जॉर रिजल्ट एंड 1 कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जॉर रिजल्ट 1 होगा, 1 एंड 1 क्या आता है, 1 आता है, सो काउंट प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर जॉर रिजल्ट 0 होता है तो 0 एंड 1 क्या होता है, 0, तो काउंट प्लस इक्वल टू 0, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आफ्टर दिस जॉर रिजल्ट को एक राइट शिफ्ट कर देता हूँ। राइट शिफ्ट मीन्स अगर मेरे पास जॉर रिजल्ट यहाँ पे 1101 था, तो आफ्टर द राइट शिफ्ट इट विल बी समथिंग लाइक 110, देन अगेन इट विल बी 11, देन अगेन इट विल इट विल बी 1। सो राइट शिफ्ट इक्वल टू 1, ठीक है। इतना मैंने काम कर दिया। आफ्टर दिस बस मेरे को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। सो रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न क्या कर देते हैं, काउंट कर देते हैं, ठीक है। So now let's run and see is this will work or not.
सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट वेल राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई, सो मैनेज कर लेना, ठीक है। लेट्स सबमिट इट एंड सी। Yeah, you can see it is saying 0 millisecond and 100% of better than C++ users. So it's a good solution because we are not using any extra space. In previous approach, we were using extra space which is vector. So here we are not using any extra space. Only we are just traversing the XOR result, which will be maximum of start comma goal. इन दोनों की जो बिट्स होगी उसमें से मैक्सिमम बिट नंबर ऑफ बिट्स जिसकी होगी उसको इक्वल होगा ये, ठीक है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन एंड इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।